फ्लैट लेकिन शेड ऑफ ग्रीन है, 1/4% कह लीजिए ऊपर शुरुआत कर रहा है। यह है अब तक का समीकरण। हेवी वेट्स भी मेंशन, एसबीआई दबाव में 1/3% पॉलिसी से पहले, आईसीआईसीआई बैंक दबाव में, तो बाकी बैंकिंग स्टॉक मजबूत होंगे। वो इंडेक्स क्यों लार्जली फ्लैट सा दिख रहा था, क्योंकि दोनों मेजर्स हेवी वेट्स एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक पस्त पड़े हुए हैं। बजाज फाइनेंस और भारती ये भी वेटेज के लिहाज से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। अदरवाइज मार्केट्स ठीक हैं, 40-50 पॉइंट ऊपर छोड़ के गया था हीट मैप में, उसी जोन पे अभी भी खड़े हुए हैं। तो हम मोटा मोटी इन जोन के आसपास अटके हुए हैं, 20,940, 20,945। हर्षदा, ये शुरुआत पर बढ़िया है, बाजार थमा हुआ सदी हुई सी शुरुआत है, सेक्टरल पॉकेट्स बढ़िया है, लार्जली स्टॉक्स ठीक ठाक कर रहे हैं। अब सारा दारोमदार शक्तिकांता दास साहब की शक्तिशाली स्पीच। हाँ जी हाँ, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन मिड कैप्स देखिए, आउट परफॉर्मेंस वहां पर है आशीष। 250 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा यहाँ पर लगभग होने की तैयारी है। नियरली 5:1 का रेशियो। 4.5 बढ़ने वाले शेयर हैं, एक जो गिर रहा है। इस समय ये स्थिति उभर कर आ रही है। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो वायदे बाजार में एक्शन मचा रहे हैं। हालांकि जी एंटरटेनमेंट है वैसे बैन में। गवा साहब ने कहा था इसमें एक्शन बनेगा। 283 के लेवल्स आ चुके हैं। यहाँ पर हरकत बढ़ती हुई 4% की तेजी के साथ शुरुआत। एक और स्टॉक जो गावा साहब से हम काफी दफा पूछते आए हैं वो है सन टीवी। वहां पर भी मजबूत शुरुआत, 2-2.5% की तेजी के साथ स्टॉक की अपने पारी खोली है। आप देखिएगा इंडिया सीमेंट में खरीदारी, अपोलो टायर में खरीदारी की पोजीशंस। पॉली कैब आज 1% ऊपर खुलता हुआ दिखाई दिया है। डाबर में 1.25% तक का इजाफा देखने को मिला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी कुछ एक्टिविटी 1% तक की बनती दिखाई दे रही है। तो ये इनफैक्ट कुछ मूवर्स हैं। जीएमआर एयरपोर्ट आपको 3.5% नीचे दिखाई देगा। दरअसल जीएमआर एयरपोर्ट में एक बड़ा ब्लॉक हुआ है, 12% की इक्विटी की अदला बदली हुई है। उस लार्ज ट्रेड की वैल्यू करीब 4,464 करोड़ आकी गई है, इसीलिए वो काउंटर आज 3-3.5% नीचे खुला है। अब क्योंकि इन ब्लॉक्स की बात कर ही रहे हैं तो 5 स्टार फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वहां पर भी 8% की इक्विटी डील हो चुकी है, लेकिन स्टॉक थोड़े दबाव में है। करीब 3-3.25% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ 731 के लेवल्स पर। 730 में मेरे ख्याल में वो सौदा पूरी तरह से निपटता हुआ दिखाई दिया था। पूरा 8% का इक्विटी की अदला बदली हो चुकी है। जोमैटो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये स्टॉक ऊपर खुला है। हम सब जानते हैं सॉफ्ट बैंक अपनी कुछ और 1% हिस्सेदारी बेच रहा है। 1% के गेन्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है एक्टिविटी क्लियरली बनी है। अब चीनी कंपनियों पर एक बार नजर डाल ली जाए, क्योंकि यहां पर कल प्रेशर था, आज वो मुनाफा वसूली का सिलसिला कायम है। बलरामपुर चीनी बैन में गया है, इसीलिए इतना टूट नहीं रहा है, लेकिन इसमें काफी धुलाई इस पूरे हफ्ते हो चुकी है। आप देखिएगा धमपुर जैसे काउंटर्स, बजाज हिंदुस्तान जैसे काउंटर्स, उनमें धीरे धीरे करके प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक वीकर पॉकेट है। आईएफएल सिक्योरिटीज जिसको हम मेंशन भी कर रहे थे, सैक से बड़ी रिलीफ, 7% प्री ओपन में ऊपर था, 10% तक के गेन्स यहां पर देखने को मिले हैं। आईआरबी इंफ्रा में 5% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। डीसीबी आज बोर्ड बैठक से पहले 2-2.5% ऊपर है। और मामा अर्थ के स्टॉक में भी आज कुछ फेवर आता हुआ करीब 2% तक के गेन्स देखने को मिले। ये है फिलहाल आज के बड़े मूव। होना सब बढ़िया, ठीक है। जीएमआर एयरपोर्ट जब तक हर्षदा बता नहीं, मैं ऐसे देख रहा था, बिना प्रमोटर के इन्वॉल्वमेंट के ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के पास पब्लिक में इतना बड़ा चंक नहीं है। इंटर प्रमोटर है कि अदरवाइज कुछ है, वो देखना पड़ेगा। अब जब डिस्क्लोजर आएंगे तब पता चलेगा, पर बड़ा चंक है, 12.5% के आसपास की इक्विटी ट्रांजैक्शन। खैर, सीएनबीसी आवाज का पैनल रेडी है। मैं और स्टॉक्स न्यूज की तरफ जो बातचीत हुई थी उन सबका प्राइस मूवमेंट बाद में दिखा दूंगा। टिकट टीम तो दिखाई रही है, हम कोई बढ़िया ट्रेड मिस ना कर जाएं, इसीलिए सीधे क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर रहा हूं। क्या सर, कहां दौड़ के रन बनाना है? टेक ध्यान देना चाहिए। एचसीएल टेक पर आज आईटी क्षेत्र में 1345 पर ट्रेड कर रहा है। 1335 का स्टॉप लगाना है, सिर्फ 10 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1360 टू 1375, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है एचसीएल टेक। आईटी पर तो आज नैस्डैक की तेजी का बुखार चढ़ा है और वहां पर एक अच्छा खासा फ्लो देखने को मिला है। तो एचसीएल टेक पहला ट्रेड। प्रशांत बताइए आपका क्विक सिंगल। जी अच्छा जी, मेरा ट्रेड होगा यूपीएल। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है। तो कल थोड़ा सा वीकनेस था, बट आज डेफिनेटली ओपनिंग ही स्ट्रांग हुई है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 580, 580। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 620, 620 तक। यूपीएल खबरों में भी था, सुमित मेंशन करके गए, बढ़िया मूव्स बनने शुरू हैं और सावंत साहब को ये खुलते ही पसंद आ रहा है। यहां पे आज हैं कमाई के बढ़िया मौके। मानस,
क्या डिसाइड किया? क्विक सिंगल कहां लेना है? जी, तो देखिए डीएलएफ पे खरीदारी करेंगे। डीएलएफ में 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज बहुत ही बढ़िया पैटर्न दिख रहा है। मेरे ख्याल से आज ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा और अच्छा खासा 20-22 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है। तो डीएलएफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 649 का स्टॉप लॉस लगाइए, 680 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 660 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 19 रुपए 50 पैसे ट्रेड हो रहा है, तो 660 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 14 रुपीज 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। 30 तक के टारगेट्स के लिए डीएलएफ में तेजी करें, 660 का कॉल लेना है। आशीष बहेती, आपका क्विक सिंगल? जी, मेरा क्विक सिंगल यूएसएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक जो 10 नवंबर के बाद गिरावट देखने मिली थी हमें, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में था और हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है एक ब्रेकआउट देने के लिए। इन लेवल्स पे पोजीशन बनाने की सलाह है यूएसएल में। 1100 का टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1055 का एसएल मेंटेन करे। सही है यार, यूएसएल चल भी रहा है। ये क्या पता नहीं फ्राइडे को ऐसा भाईती साहब के रडार पे भी आता है, ऐसा नहीं आता, जेन्युइनली आता है, कमा के देता है। वैसे हर फ्राइडे ऐसी होता है कि तेजी आ जाती है? नहीं आशीष जी, आज प्राइस एक्शन दिख रहा है इसलिए रडार पे आ गया। मैंने नोटिस किया है, यूएसएल हो यूबीएल हो, बहुत बार भाईती साहब के फ्राइडे को रडार पे आता है और हमें कमा के देके जाता है। बाय डिफॉल्ट ही प्राइस एक्शन आ जाता है। बाय डिफॉल्ट प्राइस आ जाता है, ठीक है। यूएसएल यूपीएल ये सब प्रेफर्ड पिक्स के तौर पे सतपति साहब गुड मॉर्निंग क्यों कर रहा हूँ सतपति साहब? गुड मॉर्निंग तो है ही है। आज का क्विक सिंगल कौन सा? गुड मॉर्निंग। आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि थोड़ी नजर एक बैंकिंग पे रखेंगे। उसमें से एक एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा है, लेकिन अगर मुझे एक चुनना है जहां पे मुझे लगता है एक बड़ा मूव मिल सकता है, दैट इज इंडसइंड बैंक। 1520 1521 ये करंट प्राइस है फ्यूचर में, तो आप इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 1500 का, स्विंग ट्रेड ले और इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1560 से लेके 1580। तो इंडसइंड बैंक मुझे लगता है इट इज रेडी फॉर अ बिग थर्स्ट। इंडसइंड बैंक तैयारी कर रहा है एक बड़े मूव की, 1221 के आसपास है ये। फ्यूचर्स में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। चंदन भी हमारे साथ है। चंदन गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। देखिए बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में काफी अच्छा मूवमेंट है और इंडाइसेस कंटिन्यूसली अपने हायर बेस बना रहे हैं। रियल एस्टेट के सारे काउंटर पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं और मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा प्रेस्टीज एस्टेट पे। काफी अच्छा मूवमेंट हुआ है और अभी भी मोमेंटम बरकरार रहेगा जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है, तो प्रेस्टीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मौजूदा लेवल 1165 के आसपास खरीदे। 1142 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1210 के टारगेट के लिए। तो प्रेस्टीज में तेजी की पोजीशंस लगभग 4% का इजाफा यहाँ पर। और डीएलएफ इससे पहले मानस भी मेंशन कर रहे थे, रियल एस्टेट काउंटर्स में अपॉर्चुनिटी खूब है। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मैंने मेंशन किया था, यहाँ पर मजबूत शुरुआत हुई। वॉलेटिलिटी हालांकि है, एक समय ऐसा था कि 3% ऊपर था काउंटर, अब 2% के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई ट्रेड बन रहा है क्या प्रशांत हाल में? जी हर्षा जी, इसको मैं इनफैक्ट सुबह ट्रैक कर रहा था, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि काउंटर काफी स्ट्रेच्ड है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए इसको कूल डाउन होने के लिए। अभी अगर हम देखें तो करीबन 2740, मुझे लग रहा है ये 2700 तक आए तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 2650 और वहां से टारगेट रखेंगे करीबन 2800 से लेकर 2820। इस लेवल पे सिर्फ ट्रेल करना चाहिए, बट थोड़ी डिप मिल जाए तो आप बाय कर सकते हो। पर खरीदे 2650 के आसपास ज्यादा बेहतर है, और वो स्टॉप लॉस के आसपास देखते मौका मिलता है या नहीं, लेकिन हाल पर नजरें आपकी होनी चाहिए। अच्छा, आप फटाफट से लेकर आइएगा आप स्क्रीन पर दो ट्रेड्स। एक तो जेएसडब्ल्यू स्टील जो अब 2.25% ऊपर है, 1% का ओआई एडिशन देखने को मिला है खुलने के साथ ही, और साथ ही साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आई थिंक कल गाबा साहब आप ट्रैक कर रहे थे, आज 2% की तेजी। बताइए अब नया ट्रेड और जोड़े, आपका टारगेट क्या रहेगा आज के लिए? बिल्कुल एक फ्रेश प्राइस बन सकता है आज भी। 532 पे ट्रेड करें,
स्टॉप लगाएंगे 520 का, 12 रुपीज का, थोड़ा ज्यादा है लेकिन चलेगा। टारगेट होगा 540 टू 550 जोन, वहां तक जाना चाहिए। मोमेंटम है और सेटअप बढ़िया है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। ठीक, क्रेडिट पॉलिसी से पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। वैसे पार्थिव भी हमारे साथ है। पार्थिव, कोई स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया हो तो बताइए, और साथ ही साथ इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में पहले जो HDFC जहन में आता था, उसके बियॉन्ड ये जो बाकी ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, उनमें आपको कुछ पसंद है या नहीं? अब कुछ ही देर में देखिए, आधे घंटे में वो पॉलिसी अनाउंस होगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास एंटर कर रहे हैं, आप पहुंच चुके हैं RBI। ये लीजिए, गवर्नर साहब बिल्डिंग के अंदर चले गए। अब आधा घंटा बचा है, 10 बजे पॉलिसी का अनाउंसमेंट, और दिखा दीजिएगा हमारा टीजर। बाजार के तमाम जाने माने अर्थशास्त्री, मार्केट बड़ी बड़ी वॉइसेस, बैंकर्स सब होंगे आज की इस मॉनेटरी पॉलिसी को, मेरे ख्याल से इस फाइनेंशियल ईयर की 5वीं पॉलिसी को डिकोड करने में जो मदद करेंगे। महज आधे घंटे बाद वो पॉलिसी अनाउंसमेंट। हमने पार्थिव से सवाल पूछा। पार्थिव, प्लीज गो अहेड। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में हमें कैनफिन होम बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि मेजॉरिटी उसकी जो लोन बुक है करीबन 21,000 करोड़ के आसपास पूरी सिक्योर्ड है। तो कभी भी हमने ये कंपनी में ऐसा नहीं देखा कि बड़े बड़े एनपीएस है। कभी कभी आई थिंक जो नेगेटिव न्यूज रहती है रिगार्डिंग सम अकाउंटिंग फ्रॉड्स, तो वो आई थिंक आई एम श्योर द न्यू मैनेजमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड कि उसको क्लीन अप करे, नए सिस्टम्स इंप्लीमेंट करे। कैपिटल एडिक्वेसी अगर ये कंपनी की देखे तो 24% के आसपास है। नेट एनपीएस तो 0.4 है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आई थिंक ग्रोथ अच्छा रह सकता है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी आई थिंक काफी रीजनेबल है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैनफिन होम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू हैव अ बेट ऑन HFC। HDFC के मर्जर के बाद ना आजकल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती, और कई बार सोशल मीडिया लाइव्स में लोग पूछते हैं अब HFC में कहाँ दाव लगाना है। ये आ गया, LIC हाउसिंग चल रहा था, लेकिन पसंद जो आ रहा है वो है कैनफिन होम्स, जो पार्थिव और उनकी टीम कह रही है इंटरेस्टिंग है। इन पॉकेट्स को रडार पे रखें। शुगर थोड़ा सा संभलने की आप कोशिश कर रहे हो, वो शुरुआत दबाव में थी, अब लार्जली थोड़े सारे स्टॉक्स, सबका स्टॉक का बेंचमार्क अपन बलरामपुर चीनी दिखा देते हैं। गैप डाउन खुलने के बाद आप धीरे धीरे करके सारी पॉकेट संभल रही है, क्योंकि 2-3 दिन में अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी इस पैक ने देख ली है। आई थिंक बलरामपुर बच इसीलिए गया क्योंकि यहाँ पर कल ये बैन में चला गया। हाँ, कब में आ गया, तो अनलेस उसमें और गिरावट फिर अगर लोगों को करनी थी तो कर सकते थे। पर कैश वाले भी, जैसे त्रिवेणी हुआ, बाकी हुए सब, त्रिवेणी भी दिखाइए, त्रिवेणी शुगर इंजीनियरिंग, सॉरी, वो भी आपको लोअर लेवल से खुला नीचे, और उसके बाद सब घूमने शुरू हो गए। तो ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, दिन के दौरान वॉच आउट करेंगे। इस समय तो लग रहा है हो गया जो होना था। अब क्लैरिटी, जैसे शेर खान कह रहा था, क्लैरिटी इंतजार होगा, उस पर नजर रहेगी। अच्छा, आज कुछ ही देर में फिर क्रेडिट पॉलिसी की कवरेज भी शुरू होनी है, तो एक काम करूं, 4 का चौका का टीजर दे देता हूं, और उसके बाद 9:40 के आसपास ये पैनल रेडी रहेगा, तब वो अपन लोग बढ़िया से कुछ और पिक्स का तड़का ऐड कर देंगे। टीजर दिखाएंगे डायरेक्टर साहब, 4 का चौका। तो आज का सस्ता ऑप्शन, मानस हर ट्रेड के साथ एक ऑप्शन देते हैं आपको बढ़िया सा, तो उन्हीं को बोला कि एक बढ़िया सस्ता ऑप्शन भी ढूंढ के लाओ आप। तो मानस बताएंगे एक सस्ता ऑप्शन आइडिया, FNO सुपरस्टार, क्योंकि बहेती साहब अब धीरे धीरे मूड में आ रहे हैं, वो बताएंगे आपको। अगला कौन सा चार्ट का चमत्कार, गावा सर ने कहा था कि मिडनाइट ऑयल बर्न किया, सो नहीं पाया हूं, फिर भी मैं रेडी हूं, तो उनसे फिर एक और आप पिक दो। चार्ट का चमत्कार गावा सर के नाम आ गया। प्रोड्यूसर साहब ने डिसाइड किया, गावा सर ये मैंने नहीं किया है, पर गावा सर ने कहा 6-7 स्टॉक तो वैसे ही रडार पर रहते हैं उनके, तो अपन जानेंगे चार्ट का चमत्कार। और मिड कैप फंडा के लिए, मिड कैप फंडा के लिए ही नहीं, यहां से थोड़ी सी फंडामेंटल का तड़का ऐड करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट हेमांग जानी साहब जुड़ेंगे, तो उनसे एक मिड कैप फंडा पिक और कुछ इंटरेस्टिंग मार्केट पे चर्चा भी कर लेंगे। कई सारे ट्रेड्स हमारे जानकार आइडेंटिफाई करके लाएंगे भी आपके लिए। अच्छा, प्रेस्टीज पर दिया था कॉल चंदन ने, और मैं नीचे देख रही हूँ टिकर टीम चला रही है, सारे रियल एस्टेट काउंटर्स में अच्छी तेजी बनी है। तो मैक्रोटेक करीब 2-2.25% ऊपर है, DLF भी करीब 1.5% की तेजी में। साथ ही आप लेकर आइएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज भी, गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब 0.5% के गेंस पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये पूरा पॉकेट है रियल्टी कंपनियों का जहां पर मौका अच्छा खासा देखने को मिला है। चंदन, कोई और काउंटर जिसमें फॉलो थ्रू किया जा सकता है, या फिर प्रेस्टीज के साथ ही आप बने रहना पसंद करते हैं? नहीं, देखिए पूरे रियल एस्टेट काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है, और आप देख रहे हो कि प्रेस्टीज एक प्रेफर्ड पिक रहा है और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे बने हुए हैं। DLF भी एक काउंटर हो सकता है जहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। FNO में भी स्टॉक्स है, और यहाँ पे
अपमूव बनता है। सो डीएलएफ पे ध्यान रखा जा सकता है। डीएलएफ के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 645 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 682 तक के लिए। उसके अलावा शोभा को भी हम ट्रेक करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। थोड़ा स्लो काउंटर रहता है बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। सारे रियल एस्टेट यहाँ पे वर्क करेंगे तो शोभा रियल एस्टेट में भी मोमेंटम बनना चाहिए। तो 970 का आसपास प्राइस चल रहा है, खरीदे। 950 का सपोर्ट है, आपको लगभग 1015 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो प्रेस्टीज के अलावा डीएलएफ एफएनओ में और शोभा नॉन एफएनओ में 2 काउंटर हो सकते हैं जो रियल एस्टेट में आप ट्रेड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट तो वैसे है इंटरेस्ट सेंसिटिव भी, उस पर्सपेक्टिव से भी, उस चश्मे से भी आपको देखना चाहिए आज इन रियल्टी कंपनियों को। एलआईसी हाउसिंग अब 3% ऊपर है, मजबूत है ये। इनफैक्ट निफ्टी अपने फ्यूचर्स का टॉप ट्रेडेड काउंटर है। आज मेटल कंपनियों में भी एक्टिविटी जोर पकड़ रही है। कल आपको याद होगा जेएसपीएल का जिक्र कर रही थी रचना वैद्य। आज जेएसडब्ल्यू स्टील की बारी है, 2.5% का इजाफा इधर। एनएमडीसी देखिए, ये भी करीब करीब 2% ऊपर। जेएसपीएल जो कल आपको दिलाया है रचना ने, वो भी करीब करीब 1.5% के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेटल्स में एक्शन बढ़ रहा है। बताइए प्रशांत, क्या पसंद है, जेएसडब्ल्यू या एनएमडीसी? मौका कहाँ है? जी हर्षा जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील में जिस तरह का मोमेंटम नजर आ रहा है, तो इसकी जो 840 की कॉल है एट द मनी करीबन 30 पे चल रही है। इसको हम 21 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं 21, और टारगेट रख सकते हैं करीबन 45 का। मुझे लग रहा है ये एक बहुत सस्टेन हो रहा ब्रेकआउट है और ये और स्ट्रेंथ दिखा सकता है। तो इसको ऑप्शन के जरिए मोमेंटम में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो 30 पर आ गई है कॉल। वैसे आपने भले ही 21 का मेंशन किया था, अब 30 पर खड़ी है, यानी कि यहाँ पर बड़ा डिमांड है। इनफैक्ट हिंडाल्को में भी अच्छी खासी डेवलपमेंट बनती हुई, तेजी इधर भी जोर पकड़ रही है। हिमांग जानिए हमारे साथ जुड़ गए। हिमांग, गुड मॉर्निंग। ट्रेंड तो है पॉजिटिव, भले ही सोमवार मंगलवार जितने गेंस ना देखने को मिले हो। कैसे अप्रोच कर रहे हैं और पॉलिसी से पहले क्या ट्रेड लेंगे? आई थिंक जो ओवरऑल सेंटिमेंट और सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है। यूएस मार्केट से भी अच्छे ही क्यूज आ रहे हैं और हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम, एक तो ये है कि जो इंडेक्स है उसके अंदर कोई मुझे ज्यादा इश्यूज नहीं लग रहे। आप थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख सकते हो, और दूसरा थोड़ा सा रोटेशन हो सकता है। तो जैसे बैंक्स हो गए, मेटल्स में आज हम थोड़ा सा एक्शन देख रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, ये जो सेक्टर्स जहाँ पे रिलेटिव पार्टिसिपेशन कम था, वहां पे थोड़ा ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड का कंफर्ट है। ओवरऑल पॉजिटिव व्यू लेके ही चलना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, एक दो और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब इस तेजी में हिंडाल्को भी शामिल हो चुका है। टेक्नोलॉजी कंपनियां, उस पर ध्यान दीजिएगा। राजेश सातपुते ने आई थिंक एचसीएल टेक पर एक व्यू दिया था। एलटीआई माइंट्री जैसे ट्रेड्स भी थोड़ा बहुत एक्शन आप दिखा रहे हैं, तो उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। आशीष जी, एलटीआई माइंट्री की हमने शायद हफ्ते की शुरुआत में बात की थी। हिसाब से अब मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटीज में भी मूवमेंट देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है एलटीआई में एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 5750 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5550 का एसएल मेंटेन करें। 5550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, कैरी करे उस ट्रेड को। 5615 के लेवल्स तो आ ही चुके हैं। गावा साहब, जी एंटरटेनमेंट आप प्रेफर करते लेना, हालांकि ये बैन में है, एक्टिविटी दिख रही है। सन टीवी देखिए, सन टीवी तो बैन में नहीं आया अभी तक। बताइए क्या ट्रेड लिया जाए? सन टीवी बिल्कुल बैन में नहीं है, और सन टीवी मुझे कल देखा था मैंने चार्ट, आज भी देख रहा हूँ, बढ़िया चार्ट है। एक ब्रेकआउट मिला है, 700 के आसपास गया था, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन अब मूव ऑन है। स्टॉप होगा 685। क्या पॉसिबल है कि 600 715 ये जोन है, वहां तक जा सकता है सन टीवी। स्ट्रेंथ तो है, फिलहाल ब्रेकआउट के बाद सस्टेन किया है सन टीवी। सन टीवी में अच्छा खासा तेजी, 2.5% के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। मानस, कल आपको याद होगा हम जाते जाते टायर कंपनियों का जिक्र कर रहे थे, तब कैश वाले ट्रेड्स में ज्यादा एक्शन था। सीएट, जेके टायर जैसे काउंटर्स, और सीएट पर मेरे ख्याल में किसी का व्यू भी आया था, गावा सा भी शायद बाय कॉल दे रहे थे। अपोलो टायर देखा क्या आज आपने? तो देखिए, अपोलो टायर का जो बिग ट्रेंड है वो भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। लगातार हमने हाई टॉप हाई बॉटम बनते दिखे हैं। कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट फिर भी मेरा समझना है कि जब तक ये 450 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। अगर आपको फ्रेश
You can see from the Citizens Monetary Policy's voting, the market is prepared with a business as usual policy. What is a business as usual policy? It has been a hawkish pause. That is, the Reserve Bank will say we are still interested in that 4% CPI, and otherwise just cut paste the October, no change in rates, and stance being withdrawal of accommodation. But on how to kind of read this and kind of tying in, of course, what the market is going to watch out for as well. Now, over to you. well, as one can see from the Citizens Monetary Policy's voting, the market is prepared with a business as usual policy. What is a business as usual policy? It has been a hawkish pause. That is, the Reserve Bank will say we are still interested in that 4% CPI, and otherwise just cut paste the October, no change in rates, and stance being withdrawal of accommodation. But the difference, of course, will be that the market will want to look for any new growth and inflation forecasts.
This is the base case of the market. But I just want to remind all of us that we've been wrong on 3 past occasions when we went with this expectation. In August, the Reserve Bank surprised us with that ICRR, you remember, incremental cash reserve ratio of 10%. In October, they surprised us by brandishing the OMO bond sales threat, that we want liquidity to be tight and therefore we may even sell bonds via OMO. And in between policy, and now they've surprised us with those risk weight increases, which again had a concomitant impact on interest rates and, of course, on the bond markets, the CP, CD market as well. So we have to be worried when, the consensus, including myself, believe that the Reserve Bank will once again repeat the hawkish pause. There is a chance that they will look at, very steaming growth. When you run faster than your normal potential, you may fall. So very aggressive growth of 7.6 can scare central banks. Actually, Powell is in the same position. 5.2% US growth is not normal US growth. So that's why the worry to not indicate a rate cut or a normalization. The Reserve Bank could be worried about that, and the fact that it will be 6% inflation this month, November and December, can move them, to do something. Now, what is that something? More risk weights, or God help us, is it a CRR hike? So I would say that the base expectation is a hawkish pause, but if they do some surprise like they did in August and in October in terms of an action surprise, then the market's not prepared for that. Okay, thanks a lot, Lata, for that. But we सब लोगों को एक ही कहना चाहूंगा कि आप आने वाले This is Bazaar Morning Call, broadcasting live from the CNBC TV 18 multi. Hello and welcome to our monetary policy presentation coming to you straight from Mint Street, the Reserve Bank of India head office. Joining me from the CNBC studios in Lower Parel is my colleague Ritu Singh. We will have an array of guests joining us, but just to set the context, this time, as I have said before, the Reserve Bank governor and the MPC are faced with what I would call a Rajasthani thali of good news. You've seen crude all the way down to $75. You've seen US yields, which were riding high at close to 5% in the previous policy on October 8. Now a good 80 basis points lower, close to 4.1. India's growth is steaming ahead at 7.6%, much higher than RBI's or the street expectation. And core inflation, what the Reserve Bank watches very closely, is actually falling steadily down, 6% in January and now at 4.2. With so much good news, how do you make policy for good times is the question we need to ask ourselves. Over to you, Ritu. Good morning. Your poll said status quo.
Well, that's right. Good morning, Lata. I mean, I think that's widely expected now, a hawkish pause and no change in stance. If you remember in the last policy, yet again, the governor had reiterated that 4% CPI target and made it very clear that until we get there on a durable basis, there is no question of even considering, shifting to a neutral stance. So no change in stance, no change in rates, but the markets will watch out for what happens on the growth and on the CPI projections. On growth, because of the stellar second quarter numbers, there is expectation that it will be revised up marginally, not significantly, but to about 6.7, 6.8% kind of levels from 6.5%. And on CPI, perhaps some tinkering is expected, but largely the expectation is that will also be left unchanged at 5.4% for the year. But the focus is very much going to be on the prudential measures, because wherever RBI has sensed excesses, it has raised the risk weights in the case of unsecured loans, for instance, and also on liquidity. That's another area of focus. That OMO bond sale that was announced in October, is RBI going to act on it? What will they do about keeping liquidity, comfortable in the system? It has remained tight. So those are some of the non-policy measures that the markets will watch out for. Oh, absolutely. I titled my own piece saying the Reserve Bank's talk will be more important than the MPC's walk. But we will have to wait and see. Our esteemed panel is with us. Two eminent ladies and two gentlemen. We have Lakshmi Iyer of Kotak AMC. We have Parul Mittalsena of Standard Chartered Bank, and Indranil Pan of Yes Bank, and Kaushik Das of Deutsche Bank. So two economists and two people from the market. Ladies and gentlemen, thank you very much for your time. Lakshmi, let me start with you. While I will be asking the economists what they think about the growth forecasts and the inflation forecasts, okay, I think we will get to Lakshmi in just a minute. Parul, let me address this market question to you. What has been troubling me for the last 2 days is that the Reserve Bank has surprised us in the last two policies. In August policy, the expectation was a hawkish pause, but nobody was prepared for the ICRR of 10%. Likewise, in the October policy, yes, hawkish pause, but we were not prepared that the governor will brandish the OMO sales, bond sale threat. Can there be something out of the box this time? If yes, what? Hi, Lata. You're absolutely right. Last couple of times, markets have been surprised on the hawkish side. The way liquidity tools were used, the newer liquidity tools were used to drain down market liquidity. Market is in fear. We've run out of what more can be done on the liquidity front to drain further liquidity out. From last MPC to now, we've seen a 1 lakh crore reduction in core liquidity already. So RBI have already done quite a bit. We don't think there are more tools or more requirement to do anything further from here. They have shown the path in terms of increasing the risk weights to reduce the unsecured lending, which was proliferating in the market. We think if something comes, it will be along those lines and maybe right now is too soon and doesn't have to come in the MPC. But we really have run out of options on what more can be done on the liquidity front. Maybe reiteration of OMO sales coming as and when liquidity situation moves in a direction where that becomes necessary. That in itself will be a little hawkish for the market. Okay. Well, similar question to you, Lakshmi. We just lost connection with you. Parul and I were discussing that, hawkish pause in August and in October was as is. But there was that unexpected policy announcement, action, not policy, action announcement. ICRR hike in August and, at least brandishing the OMO sales weapon in October. Can there be some unexpected action in terms of hawkishness from the Reserve Bank? Lata, hi, morning. So, they've already been selling bonds in the secondary market to the platform. And in some sense, it is, a surrogate version of OMO, just that the quantum may not be as high as an initial announcement of, a larger size of OMO. So I think that could be the only tingling factor from a market standpoint, because as you rightly alluded to and as Parul observed, that consistently in the last two policies, they've been tweaking or, at least jawboning towards the liquidity part of it. And now from a negative zone, we are kind of, toggling between a neutral and a negative zone. So I think that could be the only possible
maneuvering or tinkering around, if at all. But we also need to appreciate that currency in circulation typically tends to rise from now on till election. So I think you can't be completely oblivious to that situation. So does it really need a hawkish posturing given that crude prices are down, global inflation is on the mend, caution is warranted, no doubt, but trying to jawbone towards major hawkishness, I'm not very sure. Well, Mr. Indranil Pan, what do you think? Will it be more even than hawkish, the stance? And, of course, no changes expected on repo or the stance itself. What is your sense on the GDP and the CPI numbers? Okay, so I think hawkish or not, we did talk about the crude prices coming down, but I think crude is not one of the most important determinants for CPI at this point in time. It is more the food and how weather-related circumstances are driving food prices higher globally and also domestically in the case of certain items, including vegetables and cereals and pulses. So I think the caution will definitely be there. In terms of the liquidity, they have been warning about liquidity for some time. And yes, I think the surprise of a CRR and the OMO was there, but we were not wanting to look at that direction, even though the RBI was pointing out to excess liquidity and its efforts to reduce liquidity. Incrementally, I don't think there is anything on the liquidity side at this point in time. It's very difficult for even the RBI to do a liquidity calculation at this point in time. And if the markets are expecting an OMO calendar, like I think they were doing even after the OMO announcement happened last time, I think that is not likely to come through. And liquidity will be very crucially dependent on FX flows, and it's very difficult to put a finger on that. Well, Kaushik, what is your sense? What can RBI do out of the box? I think you had spoken about a standing deposit facility tweak. Is that something you're watching out for? Yeah, a good question, Ritu, and good morning, Ritu and Lata. So the thing is, RBI has been announcing something or the other in every policy. It's never a complete status quo policy. So we are trying to think through what can come. So one possible way to signal their hawkish stance is to maybe narrow the corridor and raise the SDF from 625 to maybe 10-15 basis points higher. That also is not that meaningful in the sense that RBI has already effectively delivered a rate hike in the October policy by pushing up the short-term rates to 685, 690. So it's just a hawkish signal from RBI's standpoint if there is the SDF. The other thing that they can do is maybe, force some, corporates to increase their hedging, ratio through banks. So there could be some macroprudential measures which forces banks to, kind of tell corporates to increase their hedging ratios, because there is a narrative that a lot of corporates are taking RBI intervention for granted and not hedging as risk management policy would need them to. So in case there is a problem later on the currency front, can they be in a different difficult position? So there could be some macroprudential measures on the forex hedging side. These are the two things I can think of. Otherwise, if they can announce an OMO today, Lata was talking about actually announcing something rather than, kind of keeping it as a possibility. So if they announce an OMO 10,000 crore, that could also come, to the market. I mean, nobody is expecting an announcement of OMO yet, given the tight liquidity. On growth, I think they'll increase it to 6.8% from 6.5. Mathematically, whatever RBI has been forecasting, it could go up by 30 basis points. Inflation, I think they can hold on to 5.4%. The November number is supposed to be around 5.7, 5.8. So RBI possibly could manage 5.4 this particular fiscal year. What will be interesting is that they will possibly give out the July-September inflation number for next fiscal year. And that could be below 4%. Our own forecast is 3.7, because this year, July-September was 6.4%. So you could get some positive surprise if the number comes at 3.7% because of base effect. So that is something which I'll look out for. Otherwise, it's more of a status quo policy, but with RBI, you never know. They can always surprise. Oh, yes. I take your point entirely, Kaushik. It's a little difficult to do something ultra hawkish when your next forecast, the incremental forecast for CPI is 4% or sub 4.
So it could be a little difficult, but nevertheless, there is the 6% inflation likely for November and December. So RBI in a tricky spot. My eyes are, at least one eye is cocked on the stock markets. We are just about 15 points away from that 21,000 mark. Mount 21,000 will be here, probably even as the governor speaks and announces that they also expect a higher GDP forecast. But you know, this whole scenario is very reminiscent of what we had during Dr. Reddy's time, when the numbers came in good, but at that time Dr. Reddy warned, are we overheating? Let's see if the Reserve Bank governor also, the Governor Shaktikanta Das, takes a page from Dr. Reddy's book and tries to sound ultra hawkish. We will know in a few minutes. I think, Ritu, it's over to you. Governor, any moment, I think. That's right. We just have a few seconds to go. So, we'll stand by for the governor just to sum up what our guests have been saying so far in terms of what can be done out of the box, perhaps some tinkering at the lower end of the corridor, the standing deposit facility. That's what Kaushik was talking about. The wider expectation is that there will be some tinkering with the GDP numbers as well. The current forecast is 6.5% for the year. Statistically, because of the higher number that has come in the second quarter, that could be revised up by 10 to 20 to 30 basis points at most. Not much change is expected as far as the inflation forecast is concerned. Currently, that is at 5.4%. No change in stance, of course, no change in rates, but you never know, cannot second guess the Reserve Bank of India, what they announce, whether it is the macroprudential measures or liquidity-related measures. The markets will be on tenterhooks to see what Governor Shaktikanta Das pulls out of his hat this time around. He's on your screen right now. Namaskar. We are now into the 8th year of our monetary policy making under the new inflation targeting framework. If you remember, this was started in October of 2016. So 7 years are complete. We are into the 8th year. And on a personal note, if I can seek your indulgence, this would be my 32nd monetary policy, including the off-cycle meeting last year and a special meeting. And at the outset, let me also wish each one of you a very happy new year in advance. And this is how the statement reads. As 2023 comes to an end and a new year begins, the long-awaited normality still eludes global economy. The years 2020 to 2023 will perhaps go down in history as the period of great volatility, comprising a host of black swan events in quick succession. The global economy is showing signs of slowdown, though unevenly across geographies and sectors. The emerging market economies, that is EMEs, as a group have remained resilient during the current bout of volatility, unlike previous episodes. While headline inflation has receded from the highs of last year, it remains above target in many countries. Core inflation continues to be sticky, impeding the last mile of disinflation. Major central banks have kept rates on hold while refraining from forward guidance in view of the prevailing uncertainties. Financial markets remain volatile in their quest for definitive signals about the future path of interest rates. Against this unsettled global environment, the Indian economy presents a picture of resilience and momentum. The real gross domestic product, that is GDP growth for Q2 of the current financial year, has exceeded all forecasts. The fundamentals of the Indian economy remain strong, with banks and corporates showing healthier balance sheets, fiscal consolidation on course, external balance remaining eminently manageable, the forex reserves providing cushion against external shocks. These factors, combined with consumer and business optimism, create congenial conditions for sustained growth of the Indian economy. Looking ahead, it is our endeavor to further build on these fundamentals, which are the best buffer against global supply shocks in today's uncertain world. Let me now turn to the decisions and the deliberations of the Monetary Policy Committee.
which was held, as you know, on 6th, 7th, and today 8th of December. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Since the last policy, CPI headline inflation moderated to 4.9% in October from 7.4% in July. The moderation was observed in all components of CPI, namely food, fuel, and core, that is CPI excluding food and fuel. There has been broad-based easing in core inflation, which is indicative of successful disinflation through monetary policy actions. The near-term outlook, however, is masked by risks to food inflation, which might lead to an inflation uptick in November and possibly in December. This needs to be watched for second-round effects, if any. Domestic economic activity is holding up well, as assessed in the previous MPC meetings and as reflected in the GDP growth for the second quarter of this year. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%, but remain highly alert and prepared to undertake appropriate policy actions as warranted. Monetary policy must continue to be actively disinflationary to ensure fuller transmission and anchoring of inflation expectations. The rate action so far is still working its way into the economy. Hence, the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that, as I have already stated, to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I would now like to provide an assessment of the growth and the inflation situation. First, let me focus on global growth in brief. The global economy continues to remain fragile. World trade is decelerating amidst global tide of protectionism. Despite significant restoration of global supply chains, factors like elevated debt levels, lingering geopolitical hostilities, and extreme weather conditions aggravate the risks to global growth and inflation outlook. Easing of inflation in advanced economies has led to expectations of an early end to the monetary policy tightening cycle, shoring up market sentiments. Sovereign bond yields are softening as markets are not factoring in any further rate hikes. Coming to domestic growth, economic activity in India exhibited buoyancy in the second quarter of this year, aided by strong domestic demand. GDP growth, as you would know, posted a robust growth of 7.6% in the second quarter of this year, that is 2023-24, driven largely by investment and government consumption. Turning to the third quarter, 2/3 of Rabi sowing has been completed despite late harvest of Kharif crops in some states. Manufacturing sector gained strength with easing input cost pressures and pickup in demand conditions. 8 core industries recorded healthy growth in October and continued their high growth since June this year. The Purchasing Managers Index, that is the PMI for manufacturing, rose in November. The services sector buoyancy has remained intact, as reflected in the high frequency indicators which the Reserve Bank monitors. GST collections at rupees 1.68 lakh crore in November 2023
were also buoyant. Services PMI displayed healthy expansion in November. In my statement, there is a lot of data available, which I have put in the footnote, so those of you who are interested can have a look at the footnotes. The entire data in support of whatever I am saying is available in the footnotes. On the demand side, households' consumption is supported by durable urban demand and gradual turnaround in rural demand, as reflected in sales of fast-moving consumer goods, that is FMCG, and other indicators. Festival-related demand is also spurring household discretionary consumption in the third quarter, that is in the current quarter. Investment activity continues to be aided by buoyancy in public sector capex. This is also reflected in strong growth in steel consumption, cement production, and imports of capital goods. Capacity utilization in the manufacturing sector continues to remain above the long period average. Investments in fixed assets by listed private sector manufacturing companies also registered healthy growth in the first half of 23-24, primarily driven by key industries such as petroleum, steel, chemicals, and cement. The total flow of resources to the commercial sector from banks and other sources at rupees 17.6 lakh crore during the current financial year so far is significantly higher than that of last year, which was at rupees 14.5 lakh crore. Despite weaknesses in external demand, both goods and services exports returned to positive territory during the month of October, in October this year. Looking ahead, private consumption should gain support from gradual improvement in rural demand, strengthening of manufacturing activity, and continued buoyancy in services. The healthy twin balance sheets of banks and corporates, high capacity utilization,